Welcome back class 9th students in our chemistry class, and we are dealing with the chapter water, chapter number 3, and this is our lecture number 2. Now in this session we will be studying about so many topics that you have already learned it earlier, you have already gone through it earlier in our 8th class. So we will have just, you can say, a recap of all those things. For example, what is solute, what is solvent, then solute plus solvent adds up to make a solution, then what is dilute solution, what is concentrated solution, then we have to go for the characteristics of a true solution, and what is the difference between solution and true solution. In fact, there is no difference between solution and true solution. The true solution is commonly named as solution. Make it clear. The true solution is commonly named as solution for our easiness. So, one by one we will go through it now. First of all, then we have to discuss about saturated solution, supersaturated solution, unsaturated solution, what are the factors. So all those things we have already studied. So let's discuss it one by one. So first of all, what is a solute and what is a solvent? So I have some pictorial diagrams also. So through it we will try to understand what it is. So let us start discussing about what is solute and what is solvent. So solute and solvent, you can say, so for that first of all let us recall that property of dissolution. Now we have studied about dissolution. If you remember, we have studied in 8th class. What is dissolution? The mixing of any solid substance or solid particle in any liquid medium, and complete mixing and complete dissolving is known as dissolution. So in this also we have to take into account that property of dissolution. So that solid substance which is mixed in it, which mixed in the medium, that is the solute, and the medium in which it is mixed, that is the solvent, and together solute plus solvent, they are known as solution. Now dear students, one thing to be a point to be noted, that here we are going to study a solution in which we are having the solute as the solid and the medium as the liquid. But it's not that only we can have such type of solution. We can have so many types of solutions. For example, on the basis of that solute can be solid, solute can be liquid, solute can be gas. Likewise, in the medium we have the solvent, it can be solid, it can be liquid, it can be gas. So all the three phases do exist in solute also and in solvent also. But for example, let us take some example. For example, solid alloys. So alloys is the example of solid solution. Gas, air, it is of gas. Then we have soft drinks, cold drinks, gas mixed in a gas mixed in a liquid. So we have that type of solution. So what I want to say, that then suppose an acid mixed in a water, so we have liquid solution. So what I make you to understand, that we can have the types of solution on the basis of the states of solute and solvent, different. Solid liquid, solid liquid, solid gas, and so on. But in this, what we have to study? We have to study the solid as the solute and the solvent as the liquid. One thing. Now second thing, if we have two types of components, means one is solute and one is solvent, that type of they are known as binary solution, or simply they are called as solution. Suppose we have more than two
2 we have ternary, 4 quaternary, but at our level we have to study the binary in which one is solute and one is solvent. That is clear. So we are going to study binary solutions, and we are going to study this type of in which solid and the medium is the liquid one. Now I have a diagram from the book only. Now we have a solvent in the form of water. Now when this in solvent, the solute is mixed, suppose it can be NaCl, it can be sugar, and it is stirred, it dissolves, so it takes the form of a solute, the solvent that it takes form of a solution. So this is known as solution. Now one more thing, important thing I would like to tell you, that aqueous solution. What do you understand by aqueous solution and non-aqueous solution? Suppose that this is the important thing, अक्सर ये कंफ्यूजन रहता है कि aqueous solution क्या है, non-aqueous solution क्या है. तो I think most of you must be knowing, but let's just have it. Aqueous solution. अगर if the solvent we are taking is water, if the solvent is water, तो जो solution कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, aqueous solution कहलाएगा. अगर हमने कोई भी सॉल्यूट लिया और उसके साथ जो सॉल्वेंट लिया है वो वाटर लिया है, तो दैट इज एक्वस सॉल्यूशन. एंड इफ अदर देन जो सॉल्वेंट है वो अदर देन वाटर है, जो सॉल्वेंट है वो अदर देन वाटर है, तो दैट इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन. दैट इज नोन एज नॉन एक्वस. फॉर एग्जाम्पल, जरूरी नहीं कि हमें हमेशा हम सॉल्वेंट को वाटर ही लें. हमने बेंजीन ले लिया, हमने टॉल्यूइन ले लिया, तो दैट इज नोन एज नॉन एक्वस सॉल्यूशन. एक्वस सॉल्यूशन एंड नॉन एक्वस सॉल्यूशन. इसी तरीके से टिंचर होता है. तो वी हैव सो मेनी केसेस. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. सो डाइल्यूट सॉल्यूशन कोई भी क्लासिफिकेशन जब होता है तो देयर इज सम बेसिस. जैसे अभी हम लोगों ने जस्ट एक क्लासिफिकेशन पढ़ा एक्वस सॉल्यूशन और नॉन एक्वस सॉल्यूशन, तो उसका बेसिस क्या था कि सॉल्वेंट क्या है. इसी तरीके से वी हैव डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस? द बेसिस ऑफ दिस इज द अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट मिक्स्ड इन द सॉल्वेंट. अब इस सॉल्यूट, इस जो सोल्यूशन हम बना रहे हैं, अगर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इन लेसर अमाउंट, अगर बहुत ही कम अमाउंट में है तो वो डाइल्यूट सोल्यूशन हो गया. इफ इट इज कंपैरेटिवली मोर देन दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, राइट. तो दिस इज डाइल्यूट. सपोज वी हैव, अक्सर तुमने सुना होगा डाइल्यूट HCl, कॉन्सेंट्रेटेड HCl, डाइल्यूट H2SO4, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4. जिसका मतलब क्या हुआ, डाइल्यूट HCl. अब HCl यहाँ पे जो सॉल्यूट है वो क्या है, इट इज नॉट ए सॉलिड, इट इज लिक्विड. और यहाँ पे हम वाटर ले रहे हैं तो लिक्विड सॉल्यूशन हम बना रहे हैं. तो अगर ये HCl जो हमने लिया है, इट इज इन ए लेसर अमाउंट इन कंपैरिजन टू द मास ऑफ द सॉल्वेंट, सो इट विल बी ए डाइल्यूट सॉल्यूशन. एंड इफ दैट HCl, तो वो कहलाएगा डाइल्यूट HCl कहलाएगा, डाइल्यूट HCl सॉल्यूशन. अगर हमने उस HCl को जो सॉल्यूट है इन द फॉर्म ऑफ ए लिक्विड, अगर उसमें हमने कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा ले लिया, मिक्स कर दिया इस वाटर में, तो दैट विल बी नोन एज कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो दिस इज डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन. तो एक्वस, नॉन एक्वस, डाइल्यूट, कॉन्सेंट्रेटेड, बाइनरी, और फिर वन थिंग, ऑल सॉल्यूशंस आर ट्रू सॉल्यूशन. जितने भी होते हैं एक्चुअली में वो ट्रू सॉल्यूशंस होते हैं, लेकिन हम उनको कहते हैं सॉल्यूशंस, राइट. वो मैंने बता दिया आपको. नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन. तो लेट अस सी व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए ट्रू सॉल्यूशन. क्यों उनको ट्रू सॉल्यूशन, उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है. तो वी हैव स्टडीड 7 to 8 पॉइंट्स इन योर क्लास, एंड नाउ वी विल हैव अ रिकैप. व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स? दैट they are clear, they are transparent, the size of the particle is about 10 to the power minus 8 or even less, 1 nanometer or less. Then they
can easily pass through the pores of a filter paper. They do not settle down. They cannot be seen even by a microscope. So one by one, let us go through it. So dear students, true solution has its own characteristic properties. So let us see. It is clear, transparent and homogeneous in nature. It is clear मतलब कि इतना अच्छे से डिजॉल्व हो जाता है, डिसोल्यूशन की जो प्रॉपर्टी इतना इट कम्स टू प्ले इन सच सिग्निफिकेंट मैनर कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट है ये पता ही नहीं चलता है. यू कैन नॉट डिस्टिंग्विश, आप अंतर नहीं बता सकते हैं कि कौन सॉल्यूट है कौन सॉल्वेंट. इसका मतलब ये हो, इट इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट means you cannot distinguish between the particles of the solute and the particles of the solvent, right? So this is and homogeneous. Homogeneous का मतलब क्या हुआ कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है, पूरे सोल्यूशन में यूनिफॉर्म कंपोजिशन मीन्स मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वहाँ पे, और यू कैन से डेंसिटी. यहाँ पे हालांकि एक नया टर्म होता है वॉल्यूम परसेंट, मास पर वॉल्यूम परसेंट होता है, तो मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो हर जगह सेम होगा, मतलब कंपोजिशन विल बी यूनिफॉर्म. देन कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर. पार्टिकल साइज जो होता है इट इज सच ए स्मॉल 10 to the power minus 10 meter, 10 to the power minus 8 centimeter, 10 to the power minus 10 meter. Particle size is such a small that it can be passed through the pores of the filter paper. इतना स्मॉल है और इतना ज़्यादा डिजॉल्व हो गया है कि वो इट डज नॉट सेटल डाउन. तो इट डज नॉट सेटल डाउन, तो इट कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ सेडिमेंटेशन. पहली चीज़. दूसरी चीज़ अभी जो मैंने बोला जस्ट बोला कि इट कैन पास थ्रू द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर, तो इट कैन नॉट सिंस इट पासेस थ्रू द होल सोल्यूशन पासेस थ्रू द. सो अगर हम सॉल्यूट और सॉल्वेंट को अलग करना चाहें तो इट कैन नॉट बी डन बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन ड्यू टू इट्स स्मॉलर साइज. देन सेपरेशन, it cannot be seen under a microscope, मतलब कि it is such clear and transparent that even it cannot be seen under a microscope. And one thing, the separation. What is the separation? How it can be separated? So it can be separated by two processes, by the process of evaporation and the process of crystallization. Evaporation का process पता है, वहाँ पे क्या शर्त होनी चाहिए? इफ़ यू रिमेंबर दैट कि वहाँ पे एवोपरेशन में जो वो होना चाहिए सॉलिड पार्टिकल जो होना चाहिए, यानी कि सॉल्यूट दैट शुड बी नॉन वोलाटाइल. क्योंकि अगर नॉन वोलाटाइल नहीं रहेगा और हम हीट एनर्जी देंगे तो लिक्विड के साथ साथ वो भी जो वोलाटाइल सॉल्यूट पार्टिकल होगा वो भी एवोपरेट कर जाएगा, तो हमें सक्सेसफुली रिकवरी नहीं मिलेगी. वी विल नॉट गेट द सक्सेसफुल रिकवरी ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स. एंड बाय द प्रोसेस ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन? वी गेट प्योर सब्सटेंस. Suppose we have seawater. Seawater is saline. Seawater contains salt plus water plus other impurities. So what happens? Due to the process of crystallization in the saturated solution, we get pure salt in the form of crystals, and the impurities are left behind. And so we can separate this by the process of evaporation and crystallization. Now, due to all these properties, it is known as a mixture, not a compound, and that is a very much obvious thing, since it shows all the properties. And the first thing is that it is being separated by physical means. The solute and the solvent are not chemically combined, so it's obvious it's a mixture. And which type of mixture is? It is a homogeneous mixture. So that's about the characteristics of a true solution, or you can say solution. Now we will discuss about saturated solution, unsaturated solution and supersaturated solution. So first of all, before discussing saturated solution, we must know that a solid particles are being dissolved, therefore they are soluble, and therefore the phenomena of solubility is taking place, which we were calling the phenomena of dissolution. So solubility depends on temperature. So whenever we will study saturated, supersaturated, unsaturated, the temperature is to be kept in mind, that all the things will be done at a particular temperature, because changing the temperature will change the solubility of that particular component or the solute.
So here why I am emphasizing on temperature, because temperature should be fixed for that particular process or for that particular phenomena. It does not mean that for different type of processes temperature will be fixed. No, for that particular process you are observing or you are going, or for a particular numerical you are observing or you are going, that T will be fixed. Now, what is a saturated solution and what is unsaturated solution? We have started making the solution. This is the solvent, water. We have started adding the solute. So, in the initial phase, this is a unsaturated solution. ये क्या कहलाएगा? Unsaturated solution. Unsaturated solution. And you are stirring it, so you get an unsaturated solution in the initial phase. Now you go on adding more solute, and this is also at a particular temperature, that is T degree Celsius. Now you go on adding more solute. So at a stage will come that even after so much stirring, this further solid particles will not dissolve in it. So that stage is known as a saturated solution, again at that particular temperature T. So we have got saturated solution at temperature T. So this is the difference. With the unsaturated means more solute can be added, and now no more solute can be added at a particular temperature T. Now again, if you want to make it unsaturated, so it can be done. Yes, the saturated solution can be done. You have already studied how it can be done, by increasing the solvent. First thing, by increasing the solvent. Second, by increasing the temperature. See, that's why I was telling that temperature is very important. That you raise the temperature, then it will be, what happens? Now saturated solution you have obtained, you increase the solvent, it's not obvious, it will become unsaturated. Now what happens here when you increase the temperature? What is basically happening in the process of dissolution? Means these are the solvent particles, listen it carefully, and solute are being added and stirred. So what happens? It occupies the intermolecular, the solute particle occupies the intermolecular spaces of the solvent. Intermolecular spaces of the solvent. Now when you increase the temperature, these intermolecular spaces increases. So solid particles gets more space to dissolve or to settle down or to take its place. Therefore more solute can be added. So by increasing the temperature, the saturated solution becomes an unsaturated solution. So this is saturated and unsaturated. What is supersaturated? It's very important. Now you have obtained a saturated solution. Listen, you have obtained a saturated solution at T degree Celsius. So M mass of solute, और सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना एट T डिग्री सेल्सियस. तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन जब बन गया है, जब इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि और इसमें सॉलिड पार्टिकल्स ऐड किए जा सके. राइट नाउ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज दैट सॉल्यूशन इन विच more solute particles can be added at that same temperature in which the saturated solution is being made. Right? कहने का मतलब क्या हुआ कि सुपर सैचुरेटेड वो सॉल्यूशन है कि अगर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और इसमें हमारे पास m मास ऑफ सॉल्यूट है, तो अब हम इसमें इसी सेम टेम्परेचर पे हम इसमें m प्लस m अगर सॉलिड पार्टिकल्स ऐड कर पा रहे हैं तो वो बन जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन. सी, तो हाउ इट इज पॉसिबल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम क्या करते हैं कि जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन है और m मास उसमें, ध्यान से सुनना मेरी बात,
m मास उसमें हमने कर दिया। अब m मास से ज़्यादा नहीं हो सकता है, T डिग्री सेल्सियस है। तो आखिर हम इसमें और कैसे मास ऐड कर सकते हैं? तो हम इसको क्या करेंगे, इस T टेम्परेचर को स्लाइटली व्हाट वी विल इंक्रीज, T प्लस T1 कर दिया टेम्परेचर को, T प्लस T1 डिग्री सेल्सियस कर दिया। तो जब T प्लस T1 डिग्री सेल्सियस कर दिया तो अभी मैंने बताया कि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बढ़ जाते हैं, तो इट हैज गॉट द टेंडेंसी टू गेट इन मोर सॉलिड पार्टिकल्स, तो वो मोर सॉलिड पार्टिकल्स हो गए m प्लस m, m प्लस m, या और आसानी के लिए कर लो m प्लस m1, क्योंकि हमने यहाँ पर T1 टेम्परेचर बढ़ा, m प्लस m1। तो अब हमारे पास जो सैचुरेटेड सोल्यूशन था m था, और हमारे पास m प्लस m1 हो गया, लेकिन टेम्परेचर भी बढ़ गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसका, इसको कूल करेंगे, इतना कूल करेंगे कि फिर वापस ये टेम्परेचर क्या हो जाए, स्लोली और बिना डिस्टर्ब किए हुए इसको कूल करके फिर से T डिग्री सेल्सियस पे लाएंगे। और अब हमारे पास सॉलिड पार्टिकल्स कितने हैं, m प्लस m1, सॉलिड पार्टिकल्स हमारे पास बढ़े हुए हैं लेकिन T डिग्री सेल्सियस पे। तो इसको इतना स्लोली कूल करते हैं और बिना डिस्टर्ब किए हुए कूल करते हैं कि जरा सा भी डिस्टर्बेंस नहीं, अदरवाइज इट विल क्रिस्टलाइज इमीडिएटली। क्रिस्टलाइज तो वैसे भी होना है। सो लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है कि वी आर गेटिंग मोर सॉलिड पार्टिकल्स एट दिस temperature only, which was the temperature of the saturated solution. So these solutions are known as super saturated solution. So I hope you have got the difference between saturated solution, super saturated solution and unsaturated solution. So this is all about the today's session, and the next session we are going to study about solubility curves and the related topics to it. So go through it, dear students, revise it, don't take it for granted that you have already studied. My advice is just revise it, go through it thoroughly. So that's all for today. Thank you very much.